Now we have discussed the built environment, which is defined as the human-made space in which people live, work, and recreate on a day-to-day basis. Mainly, four interrelated characteristics also defined as built environment. Everything created, arranged, or maintained by humans, fulfill human needs, mediate, protect us, and change environment for our comfort, result that affect the environmental context. In urban planning, architecture, and civil engineering, the term built environment or built world refers to the human-made environment that provides the setting for human activity, including homes, buildings, zoning, streets, sidewalks, open spaces, transportation options, and more. Now we discussed about elements or component of built environment. So it includes not only buildings, but the human-made spaces between buildings, such as parks and the infrastructure that supports human activity, such as transportation networks, utilities networks, flood defenses, telecommunications, and so on. The sum of the 7 components or elements are defined the scope of the total built environment, such as first one is product. It includes materials and commodities and created to extend the human capacity like pen, pencil, hammer, brick, mortar, concrete, steel, polymers and plastics, TV, aircraft, spaceships, etc. Next one is interiors. It defined by an arranged grouping of products and generally enclosed within a structures like living room, workspace, private room, public assembly hall, stadiums, etc. Next one is structures. These are planned grouping of spaces which have an internal space and external form, like houses, schools, office buildings, churches, factories, highways, tunnels, bridges, dams, etc. Next one is landscapes. These are exterior areas planned for grouping spaces, and these are generally combined both natural and built environment like courtyard, malls, parks, gardens, sites for homes, national forests, national parks, countrysides, etc. Next one is cities. These are grouping of structures and landscapes generally clustered together to define a community for economic, social, cultural, and environmental reasons. Neighborhoods, districts, villages, towns, and cities of varying sizes. Next one is regions. Grouping of cities and landscapes, and it defined by common political, social, and surrounding region of cities, countries, multi-state. Next one is Earth. The Earth include all of the above, the grouping of regions consisting of cities and landscapes. बात करेंगे मॉडर्न बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में कि आखिर मॉडर्न बिल्ट होता क्या है। जनरली देखा जाता है कि बिल्ट एनवायरनमेंट का उपयोग ह्यूमंस के आसपास की इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जैसे कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और इनके उपयोग के लिए किया जाता है, जिसे समय समय पर ह्यूमन एक्टिविटी के अनुसार बदला जाता है। जब हम इन सब में आधुनिक तकनीक को भी शामिल कर ले और आधुनिक तकनीक का उपयोग करें, तब इसे ही हम मॉडर्न बिल्ट एनवायरनमेंट बात करेंगे प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में, जिनसे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस किसी भी कम्युनिटी के भीतर बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सोशली हो या फिज़िकली। कम्युनिटी के भीतर हम जिन्हें इंक्लूड कर सके हैं वो है रोड्स, साइडवॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोड्स एंड हाईवेज़ के बारे में। रोड्स एंड हाईवेज़ मुख्य रूप से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ये यातायात की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइडवॉक्स की। साइडवॉक्स बिल्ट एनवायरनमेंट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो पैदल चलने वालों की गतिशीलता को सक्षम बनाता है और चलने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसपास के संसाधनों तक पहुंच में सुधार करके संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाता है, कार की ज़रूरत को कम करके जीवन यापन की लागत को कम करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके किसी क्षेत्र के पर्यावरणीय पदचिह्न को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल्डिंग्स की। बिल्डिंग्स की लोकेशन, डिज़ाइन एंड लेआउट सभी बिल्डिंग की कार्य और प्रभावशीलता पर प्रभाव डालते हैं। एक बिल्डिंग की लोकेशन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि एक बिल्डिंग का उपयोग कैसे और कितनी बार किया जाएगा। एक बिल्डिंग का स्थान, इसके अतिरिक्त आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित इंडोर स्पेस का डिज़ाइन इस बात पर बहुत प्रभाव डालता है कि स्पेस कैसे काम करता है और यह किस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्क्स एंड ग्रीन स्पेस की। पार्क शारीरिक गतिविधि और पर्यावरण कल्याण को बढ़ावा देने सहित पड़ोस के कई लाभ प्रदान करते हैं। पार्कों का स्थान और पहुंच भी आसपास के समुदायों पर बहुत प्रभाव डालती है, यहाँ तक कि तापमान जैसे पर्यावरणीय कारकों को भी प्रभावित करती है। We discuss about the planning and construction of a building should be aimed at fulfilling the following requirements, like strength and stability, next dimensional stability, resistance to dampness,
resistance to fire, heat insulation, sound insulation, protection against termite attack, durability, security against burglary, lighting and ventilation, comforts and convenience, and economy. First, we discuss about strength and stability. Buildings should be capable of transferring the expected loads in its life period safely to the ground. Design of various structural components like slabs, beams, walls, columns, and footing should ensure safety. None of the structural components should buckle, overturn, and collapse. Next, discuss about dimensional stability. Excessive deformation of structural components give a sense of instability and result into crack in walls, flooring, etc. All structural components should be so designed that deflections do not exceed the permissible values specified in the codes. Next, resistance to dampness. Dampness in a building is a great nuisance and it may reduce the life of the building. Great care should be taken in planning and in the construction of the building to avoid dampness. Then resistance to fire. Regarding achieving resistance to fire, the basic requirements laid down in the codes are: the structure should not ignite easily, and building orientation should be such that spread of fire is slow. And in case of fire, there should be means of easy access to vacate building quickly. Then heat insulation. A building should be so oriented and designed that it insulates interior from heat. Then sound insulation. Buildings should be planned against outdoor and indoor noises. Then protection from termite. Buildings should be protected from termites. Then durability. Each and every component of the building should be durable. Then security against burglary. This is the basic need the owner of the building expects. Then lighting and ventilation. For healthy and happy living, natural light and ventilations are required. Diffused light and good cross ventilation should be available inside the building. Then comforts and conveniences. Various units in the building should be properly grouped and integrated, keeping in mind the comfort and convenience of the user. And last, we discussed about economy. Economy without sacrificing comfort, convenience, and durability is another basic requirement of the building.